Let us see the next question. Consider following information. दो सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्स एंड वाई, दोनों का बीटा दे रखा है और दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है. रिस्क फ्री रेट इज 10%. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग सिंपल क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये है, दैट से देयर आर टू इन्वेस्टर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हु हैव डिसाइडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट एज अंडर. मिस्टर ए नाम के जो इन्वेस्टर है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एक्स का कॉम्बिनेशन करेंगे उनके पोर्टफोलियो में. एंड देयर इज एन इन्वेस्टर कॉल्ड मिस्टर बी, अगेन वो रिस्क फ्री और सिक्योरिटी वाई का कॉम्बिनेशन करेंगे अपने पोर्टफोलियो. बोथ इन्वेस्टर्स वांट टू टेक रिस्क इन देयर पोर्टफोलियो इक्वल टू बीटा 0.35. तो उनका रिस्क टॉलरेंस क्या वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. दे वांट टू हैव रिस्क ऑफ 0.35. A part of the question, calculate the proportion in which investment should be made by each of the investor. यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात कर रहे हैं इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड रिस्की सिक्योरिटी. और आगे हमको और क्वेश्चंस दे रखे हैं. चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन. मिस्टर ए, इन दैट राइट डाउन calculation of proportion in which investment to be made in RF एंड एक्स. चलो ये आंसर आप अपने आप कैलकुलेट करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो राइट डाउन आंसर. वी अंडरस्टैंड दैट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स इंटू बीटा ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इंटू बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी. दैट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वी हैव. Question is providing that the beta of the portfolio should be 0.25. What is weight of x we do not know, but x का बीटा क्या वो हमको दे रखा है 1.40 प्लस वेट ऑफ y हमको पता नहीं क्या है. सॉरी वेट ऑफ RF ओके 0.35. आई एम सॉरी, दिस इज 0.35 and that is 0. So weight of x is equal to 0.35 divided by 1.40. That is the way we are supposed to calculate the answer. That comes to 0.25. So weight of security x is 0.25. Write down answer. Now write down further. Calculation of weight of y in portfolio of Mr. B. Beta of portfolio is weight of y into beta of y. Weight of risk free into beta of risk free. रिस्क हमको चाहिए 0.35, वेट ऑफ वाई हमको पता नहीं है, इंटू बीटा ऑफ वाई इट इज 1.75. वेट ऑफ रिस्क फ्री हमको पता नहीं है, बीटा ऑफ रिस्क फ्री इज 0. सो वेट ऑफ वाई इज 0.35 डिवाइडेड बाय 1.75. So 0.35 divided by 1.75. That comes to 0.20. So ये proportion में आपको invest करना है. That is what we understand. उसके साथ साथ हमको ऐसा दे रखा है, calculate the proportion in which investment should be made.
बी क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईच ऑफ द इन्वेस्टर. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1B, उस पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. दो इन्वेस्टर्स हैं, वन इज मिस्टर ए एंड अनदर इज मिस्टर बी. मिस्टर ए के लिए क्या किया जाएगा, वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ आर एफ इंटू रिटर्न ऑफ आर एफ. एक्स का वेट हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है 0.25 मल्टीप्लाई विद एक्स का रिटर्न कितना है, इट्स 28. .75 इंटू रिस्क फ्री का रिटर्न कितना, 10. सो 0.25 इंटू 28, तो ये 7 हो जाएगा प्लस 7.5, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 14.5. बी के लिए सिमिलर होगा, वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई प्लस वेट ऑफ आर एफ इंटू रिटर्न ऑफ आर एफ. वाई सिक्योरिटी का वेट कितना है, इट इज 0.20. सो दिस इज 0.20 इंटू वाई का रिटर्न कितना है, वाई का रिटर्न है 37 प्लस 0.80 इंटू 10, that is 7.4 plus 8, that comes to 15.4. Second part of the question, if an investor is considering making investment in, highlight the portion, risk-free security with either X or Y, then which security would you recommend? That is a question. देखो हमारे पास कुछ डिटेल्स से पहले उसको लिखते हैं थोड़ा. that there are two investors A and B. Investment in RF and A सिक्योरिटी ने इन्वेस्ट किया था X में और B ने इन्वेस्ट किया था Y में. बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0.35. रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो देखो पहले में कितना है, इट इज से 14.5 दिस, और दूसरे में कितना है 15.4. चलो आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि हम लोग कौन सा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करेंगे. वी कैन सी दैट से बोथ ऑफ देम हैव सेम रिस्क, बट जो मिस्टर बी है उनका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या ज़्यादा है, कितना है 15.4 है. 15.4 इज हायर देन 14.5. ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट किया था, एक्स में नहीं. तो लुकिंग टू दिस वी कैन कंक्लूड दैट से इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन वाई एंड नॉट इन एक्स. चलो राइट आंसर. ऑल इन्वेस्टर्स would be advised to invest in RF and security Y, comma, to get maximum return for any risk level. Full stop. Now number of times the students are having a question to ask me that sir suppose कि हमारे पास directly second question होता तो सर हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालते. आपने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो समझा वो पता तो चला, बट इफ एट ऑल वी डू नॉट हैव द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, देन इन दैट केस
हाउ वी कैन गिव आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट डायरेक्टली, तो उसके लिए अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. सो राइट डाउन हेडिंग ऑल्टरनेटिव आंसर. ऑल्टरनेटिव आंसर कुछ ऐसे कैलकुलेट होगा. लिसन केयरफुली. वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनर्स रेशियो. जैसे शार्प रेशियो था ना वैसा ही है ये. इसका नाम क्या है? ट्रेनर्स रेशियो है. ट्रेनर्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज एडिशनल रिटर्न डिवाइडेड बाय एडिशनल रिस्क. फॉर्मूला भी सेम ही है जो शार्प रेशियो का था. देयर इज अ लिटिल चेंज. इट इज एक्स पर माइनस आर एफ. यानी अगर हम लोग सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्क फ्री, तो एडिशनल रिटर्न कितना मिलता है? दैट इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ द सिक्योरिटी माइनस बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी. एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बीटा ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज ऑलवेज जीरो. सो ट्रेनर्स रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स पर माइनस आर एफ divided by beta of the security. That is the way we are supposed to make the calculation of answer. Now listen carefully. There are two securities X and Y. देखो दोनों का ट्रेनर्स रेशियो अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे होगा? एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा. एक्स का रिटर्न कितना है? 28. रिस्क फ्री का रिटर्न कितना है? 10 डिवाइडेड बाय एक्स का बीटा कितना है? 1.40. तो 28 माइनस 10 18. 18 डिवाइडेड बाय 1.40. सो 12.8571. 12.857. वैसा ही हम लोग सिक्योरिटी वाई का भी कर सकते हैं. In that it is 37 minus 10 divided by beta of the security. Beta कितना दे रखा है? 1.75. So it is 37 minus 10, 27 divided by 1.75. So it is 15.4286. That is the way the trainers ratio can be calculated. और हम लोग देख सकते हैं कि y का ट्रेनर्स रेशियो x से ज़्यादा है, तो जिसका ट्रेनर्स रेशियो ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे. दैट इज द वे वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, हमको लिखने का नहीं है पर हम लोग समझ सकते हैं कि देखो मिस्टर ए वॉज रेडी टू टेक रिस्क ऑफ 0.35 एंड दिस इज व्हाट इट मेजर्स additional return for every 1 unit of risk. So 12.8571 into 0.35. एक यूनिट के रिस्क के सामने आपको इतना मिलता है तो 0.35 के सामने कितना मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लस RF is 10. सो क्या किया जाएगा? 12.8571 into 0.35, that comes to 4.50. you can see plus 10, that comes to 14.5. देखो यहाँ पे आंसर ऐसे आप क्रॉस से नहीं कर सकते हो. यहाँ पे कितना 15.4286, तो देखो यहाँ पे भी वापस कर सकते हैं 15.4286. दिस इज द एडिशनल रिटर्न over a risk-free rate of return for every 1 unit of risk. वापस हमने रिस्क कितना लिया है? 0.35. सो 15.4286 इंटू क्या करेंगे? 0.35, दैट कम्स टू 5.4, प्लस क्या करेंगे? 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15.40. दैट इज द वे यू कैन इवन क्रॉस वेरीफाई द आंसर. I request all of you to take down answer. फिर मैं नोट लिखवा देता हूँ. चलो, write down a note for this. In order to decide
which security to be combined with RF, comma, we can calculate trainers ratio. Full stop. Security having highest trainers ratio will be selected. Full stop. This ratio is similar to Sharpe ratio, comma, over here we consider risk in terms of beta, that is systematic risk, while Sharpe ratio considers total risk in form of standard deviation. Full stop.